Good morning. Welcome to IAS Help Desk. This is the fourth video in the series of discussion of previous year questions. We have started the series to discuss the previous year questions in detail along with the topic so that a student can understand the pattern of the questions asked as well as the important topics which are covered in the examination. In this video, we are discussing fundamental rights in India. This is the part 1 covering Article 14 to 18. So before moving to the main topic, let's understand the basic terms, what are rights and what are duties. Rights are the entitlements or privileges that an individual possesses, which are given by the laws or by the government. These are the basic principles of freedom which are given to the individual so that he can grow. क्योंकि अगर आपको फ्रीडम मिलेगी, आपके पास प्रिविलेजेस होंगे, तभी आप चॉइस कर पाएंगे, तभी आपकी सोशल डेवलपमेंट हो पाएगा. सो राइट्स आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम दैट इज गिवन टू द इंडिविजुअल्स. इन केस ऑफ इंडिया इट इज इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स and they are given in the constitution. Now moving to duties. Duties are the obligations or responsibilities that individual have towards the society. So अगर आप किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आइदर मॉरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स द सोसाइटी. सो बेसिक चीज़ है कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सो दैट आर नॉट एब्सोल्यूट. उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है सो यू आर नॉट फ्री टू स्पीक एनीथिंग. कि आप अगर हेट स्पीच भी कर रहे हैं देन ऑल्सो नो लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू. और आप किसी को कुछ भी कह दे रहे हैं. सो दीज आर नॉट द फंडामेंटल राइट्स गिवन टू इंडिविजुअल. सो राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. अगर आपको राइट्स मिले हैं तो आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी और टुवर्ड्स द इंडिविजुअल और टुवर्ड्स द नेशन. सो नाउ मूविंग टू द मेन टॉपिक, what are fundamental rights? Fundamental rights are the constitutional rights and they are essential for the well-being and dignity of every citizen. जैसे मैंने अभी डिस्कस करा कि अगर आपको कुछ चीज़ों, अगर आपको फ्रीडम दी गई है आइदर इन द फॉर्म ऑफ कि आपको इक्वालिटी दी गई है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यू आर फ्री टू चूज़ एनी प्रोफेशन, यू आर फ्री टू मूव फ्रीली इन द कंट्री एंड अदर थिंग्स, यू आर फ्री टू प्रोफेस योर रिलीजन. सो आपको ये सब फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपकी वेलबींग के एज ए इंडिविजुअल ग्रो करने के लिए. एंड एज फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो दे एक्ट एज ए लिमिटेशन टू द पावर्स ऑफ द स्टेट. कि अगर कोई भी स्टेट का एक्शन आपकी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है सो आप कोई भी इंडिविजुअल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकता है. सो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल एंड there are 6 fundamental rights enshrined in the constitution. We will discuss one by one in detail. So as discussed in the previous slide, I have stated that the fundamental rights act as a limitation to the state. So article 12 define करता है कि state का मतलब क्या होता है. State simple means ये नहीं है कि सिर्फ आप government की बात कर रहे हैं. State comprises government and parliament of India, government and legislature of state, all the local authorities and all the statutory and non-statutory authorities that are working under the government. And further, the Supreme Court has added that even the private bodies or agencies acting as instrument of state also comes under the Article 12. So Article 12 gives a broader picture to the term state. इनमें से अगर कोई भी आपके fundamental rights को violate कर रहा है then you can move to the High Court or the Supreme Court. And fundamental rights are provided so that कि कोई भी स्टेट ऑडिटोरियन स्टेट ना बन जाए और जो भी वर्क करे वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही करे. So there are Article 14 to Article 32 that covers the fundamental rights. We will discuss each one by one. Article 14 guarantees equality before law and equal protection of law. So in this there are two terms, equality before law and equal protection of. Equality before law means that all the citizens or all the individuals irrespective of their social, political और इकोनॉमिक स्टेटस इज सब्जेक्ट टू सेम लॉज. दैट मीन्स कि जो भी लॉज इंडिया में हैं वो सब लोगों पे इक्वली एप्लीकेबल हैं irrespective of their status, either political, economic or social, and they have been given same legal rights and protections. So
कोई भी डिस्क्रिमिनेशन और स्पेशल प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस नहीं मिलेगा. सो एंड इफ इट इज़ अगेंस्ट इट, then it is found to be the violation of Article 40. Now moving to the second term, it is equal protection of law. Equal protection of law means कि जितने भी persons हैं under same circumstances shall be given the same rights. So equality before law is a term taken from British Constitution, whereas equal protection of law is taken from American Constitution. So equal protection of law is more positive. It states that अगर जितनी भी वुमेन हैं, जितने भी एल्डर्स हैं, जितने भी चिल्ड्रन हैं और पर्टिकुलर ट्राइब्स के पीपल हैं, मीन्स अ पर्सन ऑफ सेम कैटेगरी विल बी इंटाइटल टू हैव सेम राइट्स. कि अगर कोई भी स्टूडेंट कोई भी एजुकेशन के लिए स्कूल में जा रहा है तो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट या रिलीजन उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. सो दैट इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. नाउ मूविंग टू द आर्टिकल 15, it prohibits discrimination on the basis of race, religion, caste, sex or place of birth. So this means that state कोई भी चीज़ में कोई भी rights हो या कोई भी legal rights हो, कोई भी social rights हो, उसमें discrimination नहीं करेगा. लेकिन इसमें कुछ exceptions दिए गए हैं. Means state has the power to make the rules for the empowerment of women, children, socially backward classes, SC and ST. So this will not amount to the violation of the Article 50. कि अगर हम चिल्ड्रन के लिए कोई लॉज बना रहे हैं या वुमेन के लिए हम कोई भी रूल्स बना रहे हैं या वुमेन को हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट इज़ नॉट अमाउंट टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15. So these are the exceptions given in the Article 15. Now moving to the Article 16. Article 16 says that all the people have the equal opportunity to employment or appointment to any office under the state. कि अगर कोई भी सिटीज़न किसी भी ऑफिस में काम करना चाहता है पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के, तो उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस. दिस ऑल्सो अमाउंट्स टू द एक्सेप्शंस. इन दिस the government has allowed reservation for post in favor of SC, ST and OBC, as we all know, and also Article 16(4) empowers the state to make provisions for the reservation in promotions also. So Article 16 forms the basis of the reservation system in India. Moving to Article 17. Article 17 mainly bans the untouchability. So the term untouchability is not defined in the Constitution, but the Protection of Civil Rights Act 1955 lists the offences committed on the ground of untouchability that can be punishable. To Article 18, it prohibits any title of nobility or honor to any person. जैसे पहले आपको पता है कि जो भी लोग थे उनको राजा, सर, महाराजा के फॉर्म में कहा जाता था. तो आफ्टर फ्रीडम एंड फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सोशल इक्वालिटी बनाने के लिए जितने भी ये टाइटल्स हैं उनको एबॉलिश कर दिया गया. सो अब कोई भी अपने नाम के आगे ये सब टाइटल्स नहीं लगा सकता. सेकेंडली, अगर कोई भी सिटीज़न या फॉरेनर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करा हुआ है अंडर द स्टेट, सो वो कोई भी टाइटल प्रेजेंट या कोई भी एमॉल्यूमेंट नहीं ले सकता फॉरेन कंट्री से एक्सेप्ट ऑन द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट. बट देयर इज एक्सेप्शन टू इट दैट इट डज नॉट अप्लाई टू मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस. कि जैसे आप डॉक्टर हैं, सीए हैं, ये सब आप टाइटल्स लगा सकते हैं, तो इट इज़ नॉट अमाउंट टू मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस. एंड फर्दर इन 1996 सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, these are the titles are not under Article 8. So a person can use these titles and it will not amount to the violation of Article 18. So I hope that in brief now Article 14 to 18 are clear to all of you. Now moving to the question number 1. Which of the following statement is correct? So this question is related to the rights. Rights are claims of the state against the citizens. This is wrong because it is not against the citizens. Rights are privileges which are incorporated in the constitution of a state. Rights are claims of a citizen against the state, and rights are privileges of a few citizens against the many. So option A is incorrect because it is not against the citizen. Option B is also incorrect because these are not the privileges, only privileges that are given in the constitution.
and the option D, that is privileges to only few, this is also incorrect. So option C is correct, that it are the claims of the citizens against the state. Existed in fundamental rights or the rights act as a protection against the tyranny of the state. Now moving to the question 2. In the context of India, which of the following defines relationship between rights and duties? So option A is rights are correlative with duties. Second is rights are personal, hence independent of society and duties. C is rights not duties are important for the advancement of the personality of the citizen, and D is duties not rights are important for the stability of the state. So if you see the first one, rights are correlative with duties, this option is correct, because as discussed previously, I have stated that rights and duties are the two sides of the same coin, and these are correlative to each other. If we see our option B, then it is not independent, rights are not personal. If option C is then rights not duties are important for the advancement of the personality of the citizen. Rights and duties both are important. So is the option D is also incorrect. So answer is option A. Now moving to the third question. A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles? So it is Article 14, because right to equality is given under it. So it states equality before law or the equal protection of law. That means that the same law is applied to all the person irrespective of their status. Hence, the unguided and uncontrolled discretionary power can curtail right to equality of people. Question 4. The essence, what does due process of law means? Due process of law means कि जो भी लॉज एप्लीकेबल करे गए हैं उनमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करा गया है कि नहीं. दैट मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन 5. Which of the following categories of fundamental rights incorporate protection against untouchability? So it is Article 17, and that comes under right to equality. So the answer is option D. So in this video we have discussed the articles from Article 14 to Article 18, and hope the articles and the questions are clear to you. Thank you, and please like, share and subscribe our channel for more videos. We will come with a second part of this video with article from 19 to 24. And if you have any query, you can WhatsApp at 85860555783, or you can mail us at queries.ishelpdesk@gmail.com. And for the more content and for the preparing for IAS examination, you can visit our website ishelpdesk.in.